Okay, so the next section in a bonding is basically a very important section, which is about the shape of covalent molecule. Okay, so we done with this in the last section. आपको याद होगा हमने coordinate polar non-polar covalent bond का concept पढ़ा, ठीक है? And then we move towards the coordinate covalent bonding. In between them ये थोड़ा सा एक section आया था coordinate covalent bonding का. हमने ground state, excited state पढ़ा. And then this one is the last, like the next section is basically about the shape of covalent compounds. Shape of covalent molecules. अच्छा, before I start with the shape of covalent molecule, एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, वो ये कि you should all know how to find out the central atom. सबको पता है ना कि अगर एक मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें सेंट्रल एटम क्या होगा? What is the electron geometry around the central atom? How many bond pair, how many lone pairs you have? ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपको पता लगाना आना चाहिए. Covalent molecules. Now, very important, लेकिन memorizing stuff इसमें थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है. Before we do, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए. देखें, if you have a covalent bond between two atoms, सही है, this is basically a molecule. A type molecule. B is making two covalent bond with two A's. Clear? अब these are the bond pairs of electron, है ना? ये दोनों bond pair of electron है, no lone pair of electron. These bond pair of electron being a negatively charged particles try to remain as far away from each other as possible. एक दूसरे से maximum distance पे रहना है, ठीक है? So to go to maximum distance to each other, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहने के लिए या मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने के लिए आप कुछ अंदाजा कर सकते हैं किस एंगल पे सेट होना पड़ेगा? It should be 180 degree. So that's true that you have, if you have two bond pair around the central atom, they remains at 180 degree. अच्छा, अब एक बात और है कि अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि two bond pair के अलावा on the central atom, if you have one lone pair of electron present, अच्छा, लोन पेयर डस प्रोवाइड रिपल्जन टू दीज बॉन्ड पेयर, है ना? लोन पेयर भी रिपल्जन प्रोवाइड करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्जन अभी इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. शेप चेंज होके क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह का की शेप आएगी. नाउ इट्स नॉट लीनियर, इट्स गोइंग टू बी अ नॉन लीनियर शेप एंड द बॉन्ड एंगल मस्ट बी लेस देन 180. कितना हो जाएगा? 180 से लेस होना चाहिए. अब सवाल ये है कि bond angle होता क्या है? तो this is the angle, smallest angle between two covalent bond. This is called the bond angle. ठीक है, अब ये less than 180 हो जाएगा. Can you see that the electron geometry or the electron pair present around the central atom ये define कर रहे हैं आपके molecule की shape को. ऐसा ही है ना? अगर bond pair ज्यादा है, lone pair ज्यादा है, उसी पे आपकी electron pair की geometry depend करती है. इसी बात को समझने के लिए हम एक concept पढ़ते हैं. This concept is called electron pair repulsion theory. So the subtopic is basically the valence shell electron pairs repulsion theory. Okay? And on the basis of this theory, we give the shape of any simple covalent molecule. On the basis of valence shell electron pair repulsion theory, we give the shape of a simple covalent molecule. This is called VSEPR, valence shell electron pair repulsion. Clear? Keeping an example, मैं water की example ले रहा हूँ. H, oxygen, making two covalent bonds with two hydrogen atoms. And you have how many lone pair? Two lone pair. Clear? अब देखिए. There are three regions about the repulsion in this molecule. ठीक है? एक region यहाँ पर ये है. Region A. Can I say in region A, there is a repulsion between two bond pairs. And this is the region where you have a repulsion between two bond pairs. In a similar way, this is, if I say that this one is the region B, this is the repulsion between two lone pair. Repulsion between two lone pairs. एक region और नजर आ रहा है, which is this region C, और ये भी same है, ये भी C है ना?
And this is the area where you have a repulsion between a lone pair and a bond pair. Repulsion between lone pair and bond pair. Okay, so this molecule is divided into three different regions. ऐसे ही है? The region A is a region where two bond pairs are facing each other. So this is a region where you have a repulsion between two bond pairs. B is a region where two lone pairs are facing each other. So this is the region where you have a repulsion between two lone pairs of electrons. In a similar way, C is the region where a bond pair is facing a lone pair. Agreed? Clear? Now, keeping this one in mind, this theory states that the repulsion between two lone pair is greater as compared to the repulsion between a lone pair and a bond pair, which is greater than the repulsion between two bond pair. Okay? According to valence shell electron pair repulsion theory, ये statement है बेटा इस theory का. The repulsion between two lone pairs is greater as compared to the repulsion between lone pair and bond pair, which is greater than the repulsion between two bond pair. सबसे weakest कौन सी है? Yes. Clear, beta? This is called valence shell electron pair repulsion theory. Basically, lone pair of electrons are not involved in a bonding. Okay, they are free pair of electrons present in an outermost shell. So they provide maximum repulsion. When the electron is involved in a bonding, as it is attached to both atoms, so it provides less repulsion. Right? Okay, sorry. Okay, so this is called valence shell electron pair repulsion theory. Okay, is it true? Now, according to this theory, the repulsion between two lone pair is greater than the repulsion between a lone pair and a bond pair, which is greater than the repulsion between two bond pair. ठीक है, बस ये theory याद रखिएगा और इस theory की basis पे ही हम आगे predict करते हैं कि what should be the shape of our covalent molecule. Clear? Keeping this one in mind, देखिए कुछ हमारे पास ना basic shapes हैं. And those shapes are called symmetrical shapes. उन्हें क्या कहा जाता है? Symmetrical shape. पहले हम वो symmetrical shape पढ़ लेते हैं. Symmetrical shape और the symmetrical molecules वो होते हैं जिन molecules में central atom पे कोई lone pair नहीं होता. ठीक है? So the first of all हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले symmetrical shapes पढ़ेंगे. Symmetrical molecules. Symmetrical shapes. तकरीबन मुझे पता नहीं चला. ओके, वहां से पता चला. Symmetrical shape. Symmetrical shape means no lone pairs on central atom. Clear? और सबसे पहले बात करते हैं
2 bond pairs की, 2 bond pairs. जनाब, let's suppose you have a molecule which is AB2 type molecule. सही है? कोई भी molecule होता है, जैसे BeCl2 हो सकता है as an example. So you have a central atom A making 2 covalent bond with 2 B. So there are 2 bond pair and 0 lone pair. In these type of molecule, the bond angle is 180 degree and the shape is called a linear shape. The most common example of this type of molecule is BeCl2. BeCl2. थोड़ा सा memorizing stuff है बच्चे, थोड़ी सी कुछ चीजें आपको memorize करनी पड़ेंगी इसमें, सही है? So you have beryllium, which is in a group 2, making 2 covalent bond with 2 chlorines. And if I ask you about the shape and a bond angle of BeCl2, तो आप बोलेंगे the shape is linear and the bond angle is 180 degree. ठीक है, तो शेप कैसे पता चलेगी? सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई किया, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, सही है? Clear? Now the second case, if you have 3 bond pairs, like A, B, 3 type molecule. And the examples, अभी मैं आगे example दूंगा. अगर आपके पास, if you have 3 bond pair and 0 lone pair, then the shape is going to be a trigonal planar shape. देखो ये केमिस्ट्री की शेप नहीं है, these are the basic geometrical shape, ऐसे ही है ना, 120 degrees. Okay, and the shape is called trigonal planar or triangular planar. ठीक है, और it is called trigonal planar. Now example, AlCl3, BF3, BH3 or so on. ठीक है, so AlCl3, if a molecule, if I ask you what is the shape and a bond angle of AlCl3, तो आप बोलेंगे the shape is going to be trigonal planar. ठीक है, Cl 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है, इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी कहा जाता है. अब देखिए किस तरह से इस टॉपिक को तैयार करना है आपने. सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि whenever they ask you about any molecule, सही है, सेंट्रल एटम आपने लोकेट कर लिया, उसका ग्रुप नंबर देखा, देखा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं. इन केसेस में कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, बिकॉज अभी मैं सिमेट्रिकल शेप्स पढ़ा रहा हूं आपको, without any lone pair on the central atom. In a similar way, the fourth case, how many pair of electron? 4 bond. Sorry, third case, 4 bond pairs. 4 bond pairs. Okay. Now A, B, 4. ये समझ आ रहा है ना? AB4 is basically, मैं simple से एक example दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए. Now, if you have a molecule A making 4 covalent bond with B's, नहीं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप. ठीक है, इट्स लाइक अ ट्राइपॉड स्टैंड. देखा ना ट्राइपॉड स्टैंड, ये नीचे से ट्राइपॉड स्टैंड है और एक बिल्कुल इट्स लाइक अ ट्राइपॉड. ये जो ट्राइपॉड, दिस इज अ टेट्राहेड्रल शेप. ओके, लाइक अ ट्राइपॉड स्टैंड, 1 2 3 बॉन्ड and one is going up. The bond angle is basically 109.5 degree and this shape is called tetrahedral. It's like a tripod stand. So अगर आप tripod stand की shape को, if you place it on the, like on any surface, there are 2 bonds on the plane. One is going above the plane and one is going inside the plane. So ये जो bond है, these 2 bonds are basically on the plane. मैं बल्कि इसको green से करता हूँ ताकि आपको ये shape समझ में आए. And I recommend कि आप गूगल पे टेट्राहेड्रल शेप एक दफा सर्च कीजिएगा 3D, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट में यू कैन रोटेट दैट शेप.
So when you rotate that shape and you place it on the plane, there must be two bonds coming on the plane. One is going out of the plane and one is going into the plane. So these are the two bonds that's always on the plane. ये कौन से होते हैं? ये on the plane होते हैं. ये हमें हमेशा एक साथ draw करने होते हैं, यानी next to each other. This one is going above the plane, ठीक है? And this one is going below the plane. Clear? I hope the point is. This is basically a tripod shape like this. In a similar way, the most common example of this, इसकी सबसे common example है CH4, CH3Cl, or any other type of molecule in which carbon is making four covalent bonds. So if I ask you about the shape of CH4, so आप बोलेंगे shape is going to be tetrahedral with a bond angle of 109.5. ये याद करना है सर. देखिए स्किल क्या है? स्किल रिक्वायर्ड ये है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, कि आपका सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है? एंड द सेकंड स्किल रिक्वायर्ड कि आप उस सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आइडेंटिफाई कर सकें, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी लोन पेयर यू हैव. वंस यू डू दैट, आपको आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. And the shape is called tetrahedron. ठीक है बेटा. नंबर फोर्थ केस, 5 bond pairs and 0 lone pair, because all these are the symmetrical shape. यानी मॉलिक्यूल होगा, ये कॉपी हो गया बेटा, मॉलिक्यूल होगा AB5. सेंट्रल एटम A है, मेकिंग 5 कोवेलेंट बॉन्ड विद 5. सो आपकी जो शेप होगी कुछ इस तरह की होगी. A, ठीक है? ये वही ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ठीक है? और दिस वन इज गोइंग अबव this B and this one is going below this B, ठीक है? एंड द बॉन्ड एंगल हियर इज बेसिकली द 90 डिग्री. तो याद रखिएगा इस शेप में आपके पास दो बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है? दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइगोनल हमने बनाया था बाय पिरामिडल, ठीक है? The most common example of this is basically PCl5. Central atom P making 5 covalent bond with 5 chlorine atoms. ठीक है? This one is 90 degree. And this one is chlorine के आप लोन पेयर प्लेस कर सकते हैं. And this one is 120. The shape is called trigonal bipyramidal. One more last in a symmetrical shape. Number 5, 6 bond pairs. A, B, 6 type molecule. ठीक है? A, B, 6 type molecule. कोई connected without it. क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है?
अब आ रहे हैं। Aliza, my voice is clear, बेटा? Yes, sir. ठीक है जी। ए बी 6 टाइप मॉलिक्यूल, ए मेकिंग 6 कोवलेंट बॉन्ड विद बी। ठीक है। सो दिस थोड़ा सा ये मुझे अंदाजा है कि दिस टाइप ऑफ लेक्चर इज स्लाइटली बोरिंग के इन अ वे कि कुछ बहुत ज्यादा चीजें इसमें बताने वाली नहीं है। वी हैव टू जस्ट ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। And the most common example of this one is SF6. नहीं, ऑक्टाहेड्रल शेप में देखो, ऑक्टाहेड्रल शेप में you have 8 faces, बट अगर आप उसकी लाइंस की बात करें बॉन्ड की, तो these 6 bonds are making a shape that have 8 faces. That's why it's called octahedral. ये 2D शेप बनेगा। Basically, you have 4 bonds like this, 90 degree पे, one is above and one is below. Okay, so this is basically SF6. देखिए, इन shapes का आप सबको मैं recommend कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपको आइडिया मिलेगा if you search a 3D shape once. एक दफा सर्च करके जरूर आप देखिएगा। ठीक है। So all these bond angles are 90 degree. With all, say this is basically octahedral shape. Clear? तो कॉमन एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज दीज एग्जांपल्स और इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यस आई नो कि ट्रायगोनल, देखिए लीनियर शेप में कोई इशू नहीं है। ठीक है, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्रा, अगर थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन आएगा तो आई थिंक 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 6 बॉन्ड पेयर्स में आएगा। 6 बॉन्ड पेयर भी आसान है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में आएगा। तो सिमेट्रिकल शेप्स में यस इट कुड बी लीनियर with a bond angle of 180 if you have 2 bond pair. ठीक है, it could be trigonal planar if you have 3 bond pair, bond angle 120. It could be tetrahedral if you have 4 bond pair, bond angle 109.5. It could be trigonal bipyramidal if you have a 5 bond pair, bond angles are 120 degree on the trigonal side and 90 degree on the bipyramidal side. ठीक है, in a similar way octahedral all bond angles are 90 degree if you have a shape of if you have 6 bond pairs. ठीक है, clear? Now let's quickly cover up करते हैं नॉन सिमेट्रिकल शेप्स को, ताकि आज हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। नॉन सिमेट्रिकल शेप्स वैसे तो 2 रीजंस की वजह से होती है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास एक मेन रीजन होता है विच इज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, इफ यू हैव अ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देन दिस इज अ नॉन सिमेट्रिकल शेप। ओके, नाउ फर्स्ट वन, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। यहां पर मैं आपकी दोनों शेप्स आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला केस है इफ यू हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ये तो सिमेट्रिकल शेप हो गई ना, तो मैं पहली सिमेट्रिकल शेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें याद हो जाए। क्लियर? सो यस, दिस इज ए, सॉरी, दिस इज, हाँ भाई, क्या शेप थी? लीनियर, बॉन्ड एंगल क्या था? 180। सही है। अब अगर इसमें लोन पेयर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट।
So आपके पास होगा ये कि ए ठीक है। सो आई वाज डूइंग, थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ ताकि अगर वॉइस में ग्लिच था तो वो क्लियर हो गया हो। जैसे भी है 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो SF6 शेप होगी। आप SF6 आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। नॉन सिमेट्रिकल शेप में हम वो कंडीशंस पढ़ रहे हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। याद याद रखिएगा कि इन सब केसेस में मैं पहली शेप जो आपको करवाऊंगा दैट्स बेसिकली द सिमेट्रिकल, ताकि हमारी सिमेट्रिकल शेप दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए, इफ यू हैव दिस नाउ, A making a covalent bond with B and you have one lone pair of electron. A making a single covalent bond with B because two pair of electron थे. Out of these two pair of electron you have one bond pair and one lone pair. पहली बात ये बताइए, how much should be the bond angle? Bond angle कितना होगा? Bond angle होता क्या है? The angle between two covalent bonds. Angle between two covalent. यहाँ कितने covalent bond है? एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो देयर शुड बी नो बॉन्ड एंगल। ठीक है ना? इसमें कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा। और जो शेप होगी, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, लाइक जस्ट लाइक अ पेन, सो इट्स गोइंग टू बी अ लीनियर शेप। ठीक है बेटा? सो नो बॉन्ड एंगल एंड द शेप इज लीनियर। सो फर्स्ट केस तो इंतहाई आसान है। सेकंड केस की तरफ जाते हैं। इफ यू हैव थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अगेन मैं पहली शेप आपको पिछले टॉपिक की ही रिवाइज करवाऊंगा, विच इज द सिमेट्रिकल शेप। तो सिमेट्रिकल शेप में 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 0 लोन पेयर्स होंगे। एग्रीड? क्या शेप पढ़ी थी भाई हमने? बताइए जनाब। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर के साथ, व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल इन अ शेप? ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। मैंने वहां ट्राइंगुलर प्लेनर लिखा था, यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर लिख रहा हूँ, इसे सेम थिंग। दोनों वर्ड यूज होते हैं, इसलिए मैंने दोनों वर्ड आपको दे दिए। ठीक है? कॉमन एग्जाम्पल इसकी थी AlCl3, BF3, BH3 और या BCl3 एंड सो ऑन। ठीक है? दीज आर द कॉमन एग्जांपल। सेंट्रल एटम ग्रुप 3 का है, मेकिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड। बी केस की तरफ जाते हैं। आउट ऑफ 3 बॉन्ड पेयर, इफ यू हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी काम आती है। ठीक है? अब जरा बोर्ड पे देखो बेटा, एक मिनट। नाउ यू हैव A making a covalent bond with, say, this is the case, and the bond angle was 120 degree. ठीक है? And there's a repulsion between all bond pairs, वो जो कि सबसे कम होती है। ऐसे ही है ना? अब इस केस में ऐसा नहीं है कि you have all bond pairs, you have one lone pair, so let's say this is the lone pair। अब मुझे बताओ, इस lone pair की वजह से the repulsion on these bonds increase होगी या decrease होगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज लोन पेयर प्रोवाइड मोर रिपल्शन। इस रिपल्शन के बढ़ने की वजह से पहले तो ऊपर से बॉन्ड पेयर रिपल्शन प्रोवाइड करता, नाउ अ लोन पेयर इज प्रोवाइडिंग अ रिपल्शन, जिसकी वजह से दिस बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीजेस। तो कैन आई से दैट द बॉन्ड एंगल इज नॉट 120, इट शुड बी लेस देन 120। इट शुड बी लेस देन 120। अराउंड 115 टू 118 आप कोड कर सकते हैं। क्लियर? और
डिफरेंस कम होता है, ठीक है। रफली आई जस्ट गिविंग यू रेंज, 110 से 118, 115 भी हो सकता है, 110 से 118, बट दिस इज बेसिकली द रफ आइडिया। क्लियर बेटा? नाउ थर्ड केस क्या होगा इसका? थर्ड केस इज गोइंग टू बी द सेम, जो कि करने की भी हमें जरूरत नहीं है, वन बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर्स। वन बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर के साथ यू नो दैट वी डू नॉट हैव एनी बॉन्ड एंगल। ए होगा मेकिंग टू कोवलेंट बॉन्ड्स विद बी, ठीक है। हम्म, हाँ, लोन पेयर शेप में इंक्लूड नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। शेप बनती है सिर्फ एटम्स की वजह से। तो जिस तरफ लोन पेयर है, ऑन दैट साइड यू डू नॉट हैव एनी एटम, है ना, तो वो तो शेप में काउंट ही नहीं होगा। तो इसकी शेप जो बनेगी वो इन बीज ए और बी में बनेगी, बी ए एंड देन बी। ओके, नाउ द शेप इज लीनियर विदाउट एनी बॉन्ड एंगल। यहाँ तक तो आसान है और कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो, इट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस सेक्शन, आइदर 180 होगा या फिर बॉन्ड एंगल नहीं होगा, आइदर 120 होगा या लेस देन 120 होगा। नाउ the fourth case, which is the four pair of electron, is one of the most important and one of the most asking topic. यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके एग्जाम्पल भी स्पेसिफिक हैं और इनके जो है वो बॉन्ड एंगल्स भी बहुत स्पेसिफिक हैं। द थर्ड केस, फोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन around the central atom. A case, four bond pairs and zero lone pairs, ठीक है। फोर बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर। You remember the shape is the shape क्या थी भाई? Tetrahedral? Yes, the shape is tetrahedral. Most common example is all hydrocarbon alkanes, ठीक है। And the bond angle is 109.5 degree and the shape is called tetra, ठीक है। Now the second case, B, three bond pairs and one lone pair. Very common example, NH3, ठीक है। PCl3 भी हो सकता है, बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ NH3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप वाले बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? लोन पेयर में। सो द रिमेनिंग इज दिस N H H and then this, and the bond angle should be less than 109, so इस केस में bond angle is 107 degree and the shape is called pyramidal shape because it's like a tripod stand, ऊपर वाला bond खत्म हो गया तो it's like a pyramid, okay, and the bond angle is 107. Ammonia is the example. C, two bond pairs and two lone pairs. And the most common example is H2O, H2S. Okay, oxygen या sulfur के साथ whenever hydrogen is making two covalent bond is an example of two bond pair and two lone pair. And this is hydrogen, two lone pair, and this is hydrogen. ठीक है। The bond angle is basically, in this case, the bond angle is very specific, 104.5. ठीक है, and the shape is called nonlinear.
or this is also called bent shape. This is also called V-shaped. Okay, V-shaped, bent, or non-linear. And the last case for this one is basically D, which is one bond pair and three lone pair. हाँ भाई, क्या शेप होगी? एग्जाम्पल यार बता सकते हैं कोई? थ्री लोन पेयर एंड वन बॉन्ड पेयर. Any molecule that have three lone pairs and one bond pair. याद रखिएगा, whenever there is a case of three lone pair, halogens हमेशा जहन में आना चाहिए, because halogens have 7 electron in the outermost shell. After using one electron in a bonding, उसके बाद कितने बचते हैं? 6, यानी 3 lone pairs. So the most common example is halogen making a covalent bond with hydrogen. So HCl is an example. और आपको पता होना चाहिए कि HCl के केस में you have a hydrogen making this bond with chlorine. The shape is non-linear. Sorry, the shape is linear. One bond है ना? The shape is linear and no bond angle. Clear? ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर में, इस सब टॉपिक में the most asking case is basically the case of ammonia, water, CH4. ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है. ठीक है? तो every time you see in a question कि इससे रिलेटेड ही कुछ पूछा जा रहा होगा. सेंट्रल एटम चेंज कर देगा, टर्मिनल एटम चेंज कर देंगे, बट दे आस्किंग अबाउट द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 9.5, थ्री बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर के साथ जो है वो पिरामिडल शेप होगी आपके पास, और पिरामिडल शेप में आपके पास बॉन्ड एंगल होगा 107. नॉन लीनियर शेप बी शेप बेंड शेप होगी वाटर के केस में. टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर के केस में आपके पास बॉन्ड एंगल होगा 104.5. 2.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है आफ्टर एवरी लोन पेयर. 109 से 107 हुआ, 109.5 से 107 हुआ, 107 से 104.5 हुआ, 2.5 का डिक्रीज आता है. ठीक है? क्लियर? सो ये 2.5 के डिक्रीज से भी आपको याद रह सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट और है, लास्ट नोट करके लिखेंगे हम ये बात. Multiple covalent bonds are considered as a single covalent bond. Multiple as single covalent bond, while predicting shape. ठीक है? कैसे समझ लीजिए. Let's take an example of carbon dioxide. You have carbon making double covalent bond with this oxygen and double covalent bond with this oxygen. Central atom is carbon. ठीक है? हम इससे केस लेंगे टू बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर का. Why? बिकॉज देखो, ये दोनों जो आपके पास बॉन्ड हैं ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. ठीक है? तो ये शेप में तो एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो शेप को इफेक्ट करता है ना. if all the bonds going attached to like the multiple covalent bond जब भी आपके पास होगा, it consider as a single covalent bond. So इस केस में आपके पास जो बॉन्ड एंगल होगा, again the bond angle is going to be 180 degree and the shape is a linear shape. ठीक है? So if I ask you कि मुझे बताइए जनाब, you have a C double bond O H and H. Is it the same case? C double bond O, carbon making three bond pair and zero lone pair. So the shape should be 120 degree के साथ the shape should be trigonal planar. Although ऊपर वाला double covalent bond है, लेकिन हम उसे single consider करेंगे. In a similar way, if you have carbon, double covalent bond carbon making one bond with this hydrogen, one this with, and one with this one. ठीक है? So if I ask you about कि इस कार्बन के अराउंड शेप और बॉन्ड एंगल बताइए,
So you can see this carbon is making 3 covalent bond and do not have any lone pair of electrons. So again, the shape is going to be 120° with a bond angle of 120° and the shape is trigonal planar. Okay, so multiple covalent bond वाली बात आपने याद रखनी है कि you have to count it as a single covalent bond while you predicting the shape of the molecule. ठीक है? So sum up करते हैं. You have to revise it at once बेटा. पहले तो देखो कैसे शुरू करना. बेसिक शेप लीनियर किस तरह होती है, ट्रायगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल, कॉमन सी बात है. एंड दीज टू शेप्स ऑक्टाहेड्रल एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, आई एम जस्ट मूविंग स्लोली ताकि याद हो जाए. एंड देन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ भी ऐसा याद रखने वाला नहीं है. थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में इफ यू हैव टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होगा. ऑल थ्री बॉन्ड पेयर में द बॉन्ड एंगल इज 120° and the shape is trigonal planar. The only memorizing stuff and the most asking part is basically this one. 4 pair of electron. Tetrahedral से pyramidal, pyramidal से non-linear. ठीक है, ये तीन केसेस याद रखिएगा. बॉन्ड एंगल इज 109.5, 107 एंड 104.5. ठीक है, नो मैटर आप किस तरह याद करें, मेक अ समरी पेज और समथिंग. लेकिन लेट्स सी हाउ वी वर्क आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जब वो हमसे पूछेगा, सो हाउ वी गोइंग टू आंसर. लेट्स सी. 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड के सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस है. दिस इज अ केस. देखिए, इट सेज which is the most likely shape of a molecule of hydrazine N2H4. Most likely the shape of hydrazine. ठीक है, in all these cases how many bonds nitrogen is making. एक बोर्ड पे देखिए बेटा, इन सारे केसेस में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? सब में 3 covalent bonds. It means that in all cases nitrogen must have one lone pair of electron because nitrogen is in a group 5 of the periodic table. 5 में से 3 electron bonding में use कर लिए, तो must have one lone pair of electron. So whenever this is the case of 3 bond pair, है ना, and 1 lone pair, 3 bond pair 1 lone pair के साथ, this is the same case as NH3. The shape should be pyramidal and the bond angle should be कितना था अमोनिया में बॉन्ड एंगल? 107. यू गॉट दिस पॉइंट. अमोनिया के केस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर द केस इज जस्ट लाइक अमोनिया. और अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107° का होता है और शेप आपके पास पिरामिडल होती है. ये लिखा था ना हमने. ठीक है, मैं इसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको मेमोराइज करना है. सबसे पहले हमने ये लोकेट किया कि सेंट्रल एटम के अराउंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर यू हैव, एंड देन एज पर दिस हमने इसको वर्कआउट किया. अभी एक दो एग्जांपल और करते हैं, बात आपको समझ में आ जाएगी. लेट्स सी. ओके, दिस वन. ओके, इट सेज केमिस्ट हैव बीन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सेलेनाइड. ठीक है, टू कंपेयर इट विद दैट गैस हाइड्रोजन सल्फाइड. उसने कहा हाइड्रोजन सेलेनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपैरिजन कर रहे हैं. सबसे पहले हमें ये देखना है कि सल्फर और सेलेनियम, they both belong to the same group of the periodic table which is group 6. sulfur और selenium group 6 में. am I right? और अगर आप देखेंगे तो group 6 में सल्फर से ऊपर कौन है? ऑक्सीजन है. it means that H2S is exactly the same as H2O and H2SE भी बिल्कुल वैसे ही होगा because इलेक्ट्रॉन तो सेम है. यानी केस क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर के साथ आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं दैट्स द बी ऑप्शन, है ना. 104.5 होता है, इन्होंने 104 लिखा है, बट दिस इज द केस. समझ आ रही है एप्लीकेशन? मैं ऑब्वियसली वंस यू मेमोराइज दिस जब ये क्वेश्चंस आपसे सही से अटेम्प्ट हो पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इसकी एप्लीकेशन से अंदाजा हो जाएगा कि हाउ यू हैव टू मेमोराइज इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन. देखिए, this is the case, this is the molecule and they clearly show how many bond pair and lone pair you have. हम क्या करेंगे? हम 4 pair of electrons वाले cases को apply करके we're just going to write down the bond angles. अब मुझे बताइए, this CH4 carbon making 4 covalent bond, 4 bond pair, 0 lone pair. So what should be the bond angle? 109.5 tetrahedral. Okay, NH3 type molecule, 3 bond pair and 1 lone pair. The bond angle should be sulfur
two bond pair and two lone pair. The bond angle should be 104.5. Now you can arrange from largest to smallest. Correct? You can easily arrange it from largest one. That's how you have to work out this one. इसमें क्या किया इन्होंने? They didn't mention the bond, sorry, lone pairs of electrons. So हमने क्या किया? Let's write down सिर्फ वो lone pair जो हमें required है. याद रखिएगा, oxygen is in a group 6 of the periodic table. Whenever oxygen making two covalent bond, it always have two lone pair of electrons. Okay. So ये तो हमें याद है 109.5. ये कितना होगा? Number 2. How many bond pair? 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर का केस है, अभी मैंने आपको करवाया था एक केस ये वाला, ठीक है. 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 120. ओके, एंड दिस वन इज 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 104.5. इसमें कंफ्यूजन है, मुझे पता है. देखिए, वी कंसिडर दिस डबल कोवेलेंट बॉन्ड एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. So these are the 3 bond pairs and there's no lone pair on carbon क्योंकि चारों बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. So this is the case of 3 bond pair and 0 lone pair of electrons. So it should be 120 degree and this is the example जो मैंने आपको कराई है यहाँ पर. देखिए, this is the example, ये वाली है ना. 120 डिग्री बिल्कुल सेम है ना. कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करेंगे. वन मोर लास्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस वन. देखिए, इसने कहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स फॉर्म बाय द नाइट्रोजन. यानी यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा. ओके, all these around these nitrogen atoms, this is the bond, this one and this. हाँ, ये बताएं, ये केस क्या होगा. नाइट्रोजन मेकिंग हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड ना. सो यू मस्ट हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू मस्ट हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही है, सही है. सो दिस इज द केस ऑफ 2 बॉन्ड पेयर एंड वन नॉन लीनियर शेप होगी, लेस देन 180 शेप होगी, बल्कि नहीं, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना. ठीक है, तो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर है और एक लेस देन 120 डिग्री का एंगल होगा. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बना के दिखाया था, अगर ए में से ये बी एंड दिस इज द केस, सो दिस इज लेस देन 120 डिग्री. मैंने आपको कहा था 115 से 118, फिर मैंने कहा था कि 110 से 115 तक भी आप दे सकते हैं. ठीक है, सो द बॉन्ड एंगल शुड बी लेस देन 120 एंड द लेस देन 120 इज 109. मैं दिखा देता हूँ ये कौन सा केस है बेटा. दिस इज द केस, दिस वन, बी केस. देखिए, और अब देखो बी केस है ना. डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कंसिडर करेंगे. तो नाइट्रोजन मेकिंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. देखिए इधर, हम इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करेंगे. सो दिस इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये सारे केसेस में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस है. क्लियर. क्योंकि बच्चे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा याद रखते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है. बट इफ यू मेमोराइज द बॉन्ड एंगल, आपको आराम से याद आ जाएगा. ठीक है, सो वी जस्ट कीपिंग इट टिल हियर. और लास्ट सेक्शन रह गया इसका पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स and then we move towards the intermolecular forces. So I think next class, or almost like next class, we're going to done with the bonding chapter. ठीक है.